Ladies and gentlemen, Namaste. I'm Dr. Vineet Gera from Gurukul Publishing, Hyderabad, and this is yet another episode of our podcast series, Hall of Fame, wherein we make you meet the great authors. So आज इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज हमारे साथ हैं डॉक्टर मोनिका नागपाल, जो कि एक रेडिकल पॉज कोच हैं, पेरेंटिंग कोच हैं, सर्टिफाइड करियर काउंसलर हैं और एग्जीक्यूटिव कोच हैं और बहुत कुछ, राइट। सो बहुत बहुत स्वागत है मोनिका नागपाल जी आपका आज के इस खास कार्यक्रम में। थैंक यू थैंक यू सो सो मच फॉर मच। ज्वाइनिंग। थैंक यू सो मच विनीत जी, आपने ये जो सौभाग्य दिया है हमें, दिस अपॉर्चुनिटी दैट यू हैव गिवन, इट इज अमेजिंग एंड आई एम रियली रियली ग्रेटफुल, एंड द वर्क यू आर डूइंग इज ट्रेमेंडस, रियली थैंक यू, रियली अप्रिशिएबल। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच मैम। तो चलिए जी, आज का पॉडकास्ट शुरू करते हैं और मेरा पहला सवाल आपकी लेटेस्ट जो किताब है, जो कि अमेजॉन नंबर 1 बेस्ट सेलर भी रही है, लीडिंग विद अ पॉज, जी। कैसे आपको ये टाइटल ध्यान में आया? आई नो इससे पहली किताब भी आपकी पॉज से रिलेटेड है, तो हाँ ये जी। क्या है पॉज, एक बार जरा आसान शब्दों में समझा दीजिए। हाँ जी। हाँ जी, मैं पहले किताब दिखा देती हूँ, उल्टा जी। दिख रहा है लेकिन लेकिन फिर भी बता रही हूँ सबको कि दिस इज द बुक विच इज अवेलेबल एंड विच कैन बी बॉट फ्रॉम Amazon, एज सर ने जब भी बताया। तो पॉज लीडिंग विद पॉज जो आया, पहले भी मेरी जो किताब है उसका नाम है ग्रेटिट्यूड विद पॉज। तो पॉज लेने का जो था, क्योंकि मैं खुद ही इतना भाग रही थी, तो स्टार्ट तो वहीं से हुआ ये, बिकॉज आई वॉज रनिंग सो मच, एवरीथिंग, द होल डे आई नीड टू डू सो सो मच, अदरवाइज दिन मतलब कुछ अच्छा खाते ही नहीं होता था। इट इज एज इफ आई हैव डन नथिंग इन द डे बिकॉज आई हैव टू डू समथिंग। एंड देन माइंडफुलनेस केम इनटू माय लाइफ, लाइक ड्यूरिंग कोविड जो हुआ हम लोगों के साथ, हम लोग सब ठहर गए। दैट वाज द रियल पॉज, एंड दैट started to tick me ki when people are now in pause, when the nature was in pause, everything started to bloom so beautifully. And that is where this concept of pause just kept in. And then I started to work on that, and that is how I became a radical pause coach, that we don't have to wait for a pause, we don't have to wait for another COVID to make a stop or take a pause, but we have to take a radical pause. एंड फिर इसी तरीके से आई स्टार्टेड अ पॉज टॉक विद वुमेन। तो मेरा पॉडकास्ट सीरीज है, पूरा 52 एपिसोड्स का है, in which I spoke to women regarding their pauses in their life and how they have brought out that and how they have become even better after that pause. So यहाँ से मेरी जर्नी शुरू हुई। आप अनम्यूट अनम्यूट करेंगे? हाँ। माफ कीजिएगा, ओके। सो लीडरशिप, लीडिंग विद पॉज में लीडरशिप का कॉन्टेक्स्ट कैसे जहन में आया और कैसे आज के इस फास्ट पेस वर्ल्ड में हाउ डू यू लुक एट इट, द लीडिंग विद द पॉज? राइट। तो अभी जैसे हम को मालूम ही है, बिकॉज द व्हेन कोविड केम इट ऑल स्टॉप्ड, पीपल वर वर्किंग फ्रॉम होम, and at that time they understood that going to the office, standing in that uh, rush, the chaos, and in the office with the kind of politics they used to have, all that was paused. So how their leadership evolved because of that. There were of course there were so many other things also that happened because they were not able to go to the office, so interpersonal relationships were not able to meet. But then the pause was very very important. So otherwise we are gratifying this kind of a hustle culture, फटाफट करो, फिनिश करो, टारगेट है, all that is happening. So because of that, lot of things are coming up in people's life, and that is where the pause enters the leadership scenario also. So it is not a pause for a person who is at home or doing something else, but as a leader also we need to pause. And that is why, because I did a few courses here and there, and then as an executive coach, I also did my course with IBS on branding and leading self. I could understand when I was talking to so many executives, so many professionals, for my clients also, that they are actually so overwhelmed by the kind of scenario that they are having. And that is why I thought, let us pen down all of this and introduce them to the concept of pause. ग्रेट, ग्रेट।
Now, as you know that as you have discussed, key leaders are exhausted with multitasking, meeting the deadlines, बहुत कुछ करो, सारा कुछ करना है ना? So obviously there are some burnouts. So how can one identify those symptoms of these burnouts so that he can take a pause and can come back? Yes, yes, of course, this is very important to know, because if we don't know the symptoms, how will we do the how will we cure it? So it is so important to understand that. And everything today is, we talk about mental health in such a big way today, which was not there some years before. People were not talking about mental health. They feel ashamed of it. But today everybody is so open about talking about mental health. So what leads to that mental health is this burnout. And that burnout could be in the form of when you feel that there is emotional fatigue. It is not only physical fatigue. You are emotionally fatigued. You are chronically overwhelmed by the work. आपके डेस्क पे किताबें पड़ी हैं, फाइलें पड़ी हैं, और आपको समझ में नहीं आ रहा कि कौन सी फाइल पहले उठानी है मेरे को. And then there is lack of clarity. You enter the boardroom and you are blanked out. You don't even know what to speak at that moment. And then there is an important decision to be made, and at that time you are not able to take the decision. So this is an alarming call. This is the burnout which is happening in you, and that is where you need to really take a pause. And that is where we introduce this book to you, Leading with the Pause. Great. Okay. In your book, you have mentioned about 10 different strategies for leaders, right? And Yes, primarily, those strategies are related to mindfulness or emotional intelligence. Can yes. you break down any one or two of your favorite strategies जो best workout कर सकती हैं for any leader? Absolutely, absolutely. So this is the whole of the book is about mindfulness, taking a pause. But then it is, mindfulness is not only just sitting silently. No, it is, we have different strategies for that also. That is why we have 10 strategies to actually build that mindfulness muscle in you. So most important is, my favorite one you can say, is the intentional presence, because today it is all about being present. It is not about being perfect. I must say that it is not about being perfect, but how present you are in the present moment. So in your conversation, in your meetings, even in conflict, आपको पता तो होना चाहिए आप किस मुद्दे पे लड़ रहे हैं किसी से. आपका मुद्दा क्या है? कभी कभी तो मुद्दा भूल जाते हैं, बस लड़ रहे हैं और उन्हें पता ही नहीं है हम किस बात पे लड़ रहे हैं. सो इवन इन कॉन्फ्लिक्ट यू हैव टू बी प्रेजेंट. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. So that is where I offer 1 minute of arrival practice. Actually, this is in the book also. I have, in the book we have given a lot of activities to show there. So before a meeting, you just simply stop, take a 3 conscious breath, and you set an intention of what you are going to show up now. How are you going to show up in this meeting? Are you going to be a person who is going to listen properly? Or are you just going to give your own monologue and come out of the boardroom? So, what are you going to be there at that moment? So, that is the intentional presence you make for yourself. Another very beautiful strategy which I speak about in this book is about creating boundaries by the leaders. So when we talk of boundaries, usually I also speak this in many other talks also, that today we are talking about boundaries, but in boundaries we are just not creating any windows and doors. So if you're only in boundaries, you will be claustrophobic and you will not have any, you will not be able to breathe also. So you need to have little windows and doors in the boundaries also. So that is where leadership boundaries comes. So the leadership boundaries is all about honoring the people there, respecting them, empowering others the same way that you feel empowered. So it is not about just saying ki, no, I don't want anybody in present, but it is about having that clarity. Your boundary is that you have clarity in what you're going to speak, what you're going to present, what decision you are going to make, that so much of clarity you have there. So this is that you know your limits, the person's people will also know their limits, but then the relationship is not hindered because you have created a boundary. You will still have that beautiful bond with your colleagues, with your team members. So I think these are the two beautiful strategies which we can apply. सुपर सुपर, बहुत मजा आ रहा है आपसे बात करते हुए और बिल्कुल यूनिक एक पर्सपेक्टिव है ऑन द लीडरशिप.
जी। आपकी किताब में एक जिक्र किया आपने, शिफ्टिंग फ्रॉम रिएक्टिविटी टू रिफ्लेक्शन। राइट। तो मेरा अगला सवाल इसी से रिलेटेड है। एक तो इसको आसान शब्दों में बता दीजिए कि क्या है ये, और दूसरा, इफ somebody इज यू नो मेकिंग क्विक डिसीजन, इम्पल्सिव डिसीजन, फटाफट से मल्टीटास्किंग, कौन सा ऐसा फर्स्ट स्टेप हो सकता है सो दैट ही कैन become habituated to take the pause and calmly take the decisions? Absolutely, absolutely. So, reactivity to reflection. Usually, we called don't react but respond. No, usually we go by this way. Actually, don't react but respond. क्योंकि react तो सब लोग ही कर जाते हैं. It is not a chemical reaction that you have to react. We are humans, so we don't need to react. We need to respond. But here we go a little further. We talk about reflection, that instead of reacting, you take a pause and you reflect on what you need to say and what the other person is said, and you have to reflect on that also. कभी कभी क्या होता है, हम सामने वाला जो बोल रहा है उसको सुनते नहीं है, हम पहले ही उसके आंसर सोचने लग जाते हैं कि अब ये मैं ये जवाब दूंगा इसको. सो वी आर ट्राइंग टू फिगर आउट द आंसर्स टू द पर्सन जो उसने शायद पूछना भी ना हो, बट वी आर फिगर आउटिंग द आंसर्स. So that is how we are reacting, though we are not even speaking, but still we are in that reacting mode. But here, when we take a pause, we are talking about reflecting. So when that person is talking, you listen carefully with lot of mindfulness and you reflect that what is the actual thing behind this person. Probably this person is speaking out of some problem, out of some विनिंग पोस्चर ऑल्सो हो सकता है उनका, दोनों हो सकते हैं, नेगेटिव पॉजिटिव दोनों हो सकते हैं. तो अगर आपको वो ज्यादा ओवरवेलमिंग लग रहा है तो आपकी ईगो को हर्ट हो जाएगा, तो आपको लगेगा कि मैं इसको नीचे करने के लिए कैसे एक आंसर दूं. और अगर आपको लग रहा है कि वो तो बहुत ढीला पड़ा हुआ है तो आप उसको एनकरेज करने के लिए पहले सोचने लग जाएंगे, अरे ये बताऊंगा, मोटिवेट करूंगा इसको. So all that happens when we are in reactive mode. But when we are in a reflective mode, we wait for that person to finish. So the best thing to start is to take micro pauses. आपको कोई लंबा सा कोई मूवी करने की जरूरत नहीं है. Just that small micro pauses. 5 seconds. 5 seconds of a micro pause to take a deep breath. No, सांस तो हम सब ले रहे हैं, but that conscious breathing is that deep breath. So once the person has finished, you take a deep breath and then you reply or you ask or whatever you have to do. So that becomes a micro pause for yourself. And this is very easy to incorporate in everyday lives. So we can just begin with that, I think. करेक्ट, करेक्ट. एक्चुअली मेरा अगला सवाल भी इसी से जुड़ा हुआ है, बिकॉज आपकी किताब में there are a lot of practical tools also which you have mentioned. Some exercises are there, right? Now, what I feel is all of us are leaders in some or the other area, right? It's not that the person who is going to the office and working is the leader, right? So, क्या डेली लाइफ में, अपने घर में, पर्सनल लाइफ में, how we can start implementing this pause and how it can Absolutely. help? Yeah, absolutely. This is so important that before a leader, we are all humans. Before any other role that we adopt in our life, we are humans. So everybody needs that kind of a pause, because to lead a fulfilled and happy and a life of well-being, we need to have a healthy mind and healthy body. And that is where pause is important. Pause is not a kind of a passive thing. You are stopping yourself. No, it is, we are not stopping. It is not a passive thing. Pause is not passive. It is very, very powerful. So the exercise which we can incorporate on a daily basis, it is, we can call it the power pause. That how we can have a power pause on a daily basis, so that your life goes smoothly. Starting from the day, your day goes smoothly, I say, then your week goes smoothly, the month and the year, and that is how your life starts to go smoothly. So you have to begin today. That is important. You have to decide that I will begin today. So first is your that night pause. No, how you finish your night, that is how you begin your day then. So if you are taking the right pause at the night, switching your digitally pausing your everything, so that is most important.
And then when you begin your day, how you begin your day is important. I know everybody to nowadays is very much into yoga and lot of exercises they are doing, morning walk. Yes, yeah, this is fine. You are all doing all of this. This is very good. But one small thing which we all can incorporate is that when you sit down for that 5 minutes every day after you have done your morning chores, you can just say, how am I feeling right now? Because we have stopped feeling the feel. कोई आपसे पूछेगा क्या हाल है, हाँ ठीक है, सब चल रहा है. या अगर आप बहुत खुश मिजाज है तो अरे फर्स्ट क्लास बोल देंगे आप. मतलब द एक्चुअल फीलिंग, वी आर नॉट स्टॉपिंग टू फील द फील. So that is the first thing you have to ask, how I feel right now. That is the first question you can ask. Then how do you want to bring my day today? मैं आज के दिन में अपना क्या लेना चाहता हूँ, आज का दिन मैं कैसे गुजारना चाहता हूँ. अगर आपने वो डिटर्मिनेशन सुबह ले ली, वो इंटेंशन सुबह दे दी आपने, तो ऑब्वियसली आपका दिन वैसे ही होने वाला है. सो दैट पॉज विल हेल्प यू देयर. एंड द थर्ड थिंग यू कैन से इज दैट what one thing I will focus on the today, so that I can make my day a very meaningful day. We are not here to exist, we are here to live our days. So why live a life? We can live a life only when we live a day. तो पहले एक दिन चुनिए, वो है आज का दिन. कभी नहीं करेंगे, आज करेंगे और अभी करेंगे. और ये पॉज ले लें 3 क्वेश्चन के साथ बस. बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया. एंड वेरी प्रैक्टिकल, इजी टू इम्प्लीमेंट रादर, आई वुड से, यस, है ना? एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली. Okay, Dr. Monica, since you have been dealing with executives from different companies, एक छोटा सा सिनेरियो आपको बोलता हूँ. Once upon a time when I was working with a corporate, so एक हमारी वीकली मीटिंग होती थी बॉस के साथ. तो उस मीटिंग में one of my friend used to keep on speaking, whether it is logical or illogical. So मीटिंग से बाहर आने के बाद when I asked him, मैं कहा यार तुम क्या बोल रहे थे मीटिंग में? This was not the agenda to discuss. बोला अगर मैं बोलूंगा नहीं तो they will feel that I am weak. If I'll not speak, they will feel that, I cannot take decisions. So I need to करेक्ट. showcase myself. एब्सोल्युटली So, so, एब्सोल्युटली. so ये जो मिसकंसेप्शन है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? बहुत अच्छा सवाल है. दिस इज सच अ पावरफुल क्वेश्चन बिकॉज दिस इज व्हाई दिस इज अ हिंड्रेंस एक्चुअली इन द माइंडसेट ऑफ लीडर्स नॉट टू इनकॉर्पोरेट दिस पॉज इन देयर लाइफ. बिकॉज दे थिंक पॉज मीन्स आप तो स्लो हैं, यू आर नॉट शोइंग योर प्रेजेंस एट ऑल, एज आपके फ्रेंड ने जैसे बताया. और उनको लगता है कि पॉज का मतलब अब ये ब्रेक ले लिया, तो ब्रेक के बाद तो अब हम खत्म, अब ये ब्रेक हो गया हमारा. So that is where they feel that this is a weakness. It is not my strength. And saying powerfully, showing up on a daily basis and doing. That is what it is. तो मैं भी आपको एक इस बात पे एक छोटी सी एक एपिसोड बता देती हूँ मेरा. When I started to find courses for coaching, तो कोचिंग करने के दौरान पे फोन करके मैंने 2-4 का पता लगाया, तो उनको कॉल बैक आना शुरू हो गया जब फॉर्म भर के भेजे तो एक्रेडिटेशन वाले कोर्सेज के लिए. सो वन एवरी टाइम दे विल कॉल अप एंड दे विल आस्क, मैम व्हाट डू यू डू? एंड आई एम काइंड ऑफ अ हाउस वाइफ. मैं अपने आप को वही बोलती हूँ कि एक होम मेकर है हम, तो होम मेकर से बड़ा लीडर तो कोई हो ही नहीं सकता है, क्योंकि वो सीईओ ऑफ द फैमिली वही है, तो वो उससे बड़ा लीडर तो कोई है ही नहीं. बट देन this is about 6-7 years back, before I had full time come into coaching and everything. And then 4 हो गए 5 हो गए यही पूछ रहे हैं, मैम व्हाट डू यू डू? तो अब छठे वाले को तो फिर आई व्हेन ही कॉल्ड अप, ही सेज मैम व्हाट डू यू डू? आई सेज आई डू नथिंग, आई जस्ट बी. And he was taken aback and he said okay thank you, and he kept the phone. So that is where you need to understand the meaning of pause, that you have to be. Now how you can be in this present moment. So pause actually shows your emotional maturity. It is helping you to actually regulate your emotions, and it is actually like framing it way that transforms how teams perceive and respect the moment of stillness. As a leader, we have to lead by example by doing this. Only then the team will follow all of this. And I'm sure if you have read the stories of all the great leaders now from every MNCs around the world,
you will read in their stories that how they have now taken up mindfulness in incorporated their mindfulness in their life, and that is how they have become such great leaders. सत्या नडेला देख लीजिए, या नोई, इंदिरा नोई को देख लीजिए, कोई भी आप लीडर के बारे में बात करें, everybody is practicing mindfulness nowadays, so it is not a weakness at all. Correct. Rightly said. Rightly said. Okay, now we are moving towards the last leg of this podcast interview. और एक बड़ा इम्पोर्टेंट सवाल, बिकॉज जो लोग हमारे व्यूअर्स हैं, इफ दे वांट टू स्टार्ट दिस प्रैक्टिसिंग इंटेंशनली in order to ensure that yes, impactful leadership can be demonstrated, तो one small piece of advice क्या रहेगा उनके लिए? तो सबसे बड़ी एडवाइस यही है कि आप पॉज लेना शुरू करें एंड टू डू लिस्ट की जगह टू बी लिस्ट बनाएं. तो instead of that I will do all of this, you will say today I will be more patient, today I will be compassionate, I will be honest. जो भी आपको लगता है जो आप कर सकते हैं, करना वो वाला करना नहीं, आप रह सकते हैं, आप बन सकते हैं. So it is about like being, it is not about doing. We are human beings, we are not human doings. That is the difference by taking a pause. तो यही बात अगर हम समझ जाएं तो we can lead with a pause so that we can lead with purpose. So यही मेरा मैसेज है सबके लिए कि ये यही इनकॉर्पोरेट करें. Take that pause and lead with pause. क्या बात है, बहुत बढ़िया बात कही आपने. टू डू लिस्ट की जगह टू बी लिस्ट बनाएं. आज के लिए मुझे तो बहुत सारे टेक अवेज मिले. एक तो ये टू बी लिस्ट बनाने वाला, और दूसरा ये कि रिएक्टिविटी से रिफ्लेक्शन की तरफ जाके फिर आप चाहें तो रिस्पॉन्ड करें. दैट्स अनदर थिंग. बहुत अच्छा लगा मैम आपसे बात करके. और जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं उन लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, इस बुक का बाय लिंक आई विल पुट इट इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ द वीडियो, सो यू कैन गो ahead and buy. It's a unique concept and I'm sure that you would love this. Thank you so much, ma'am, for joining this podcast. Thanks a lot. Thank you so much for bringing me here. And I'm requesting all the viewers who are going to see this that you can watch all the podcasts which sir is giving, because every book is unique and every author has put their life into their books. So please go back and see all of their books. And thank you so much, sir, for doing this amazing work. Thank you so much. Thank you. Thank you so much, ma'am. दर्शकों, ये थी डॉक्टर मोनिका नागपाल, जिनसे आज हमने उनके बुक के बारे में चर्चा की. और बहुत ही यूनिक कॉन्सेप्ट है, एंड आई एम श्योर दैट इफ यू रीड द बुक यू वुड लव ईच एंड एवरी बिट ऑफ इट. बिकॉज ये सिर्फ किताब नहीं है, इट इज़ अ टूल किट. देर आर लॉट ऑफ प्रैक्टिकल एक्सरसाइजेज इन इट which can make your life better. Whether you are working in a corporate, or you are into the business, or you are a homemaker, be it anything, it is applicable, equally applicable everywhere, everywhere. अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं यूट्यूब पे, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ताकि इसी तरह के और इंटरेस्टिंग वीडियोस आपको मिलते रहे. और अगर आप इसे देख रहे हैं फेसबुक पे, तो पेज को लाइक करके जरूर जाइएगा. बहुत बहुत धन्यवाद. आपसे फिर मुलाकात करेंगे एक और शख्सियत के साथ अगले एपिसोड में. थैंक यू सो मच. Thank you so much.